Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya. Sri Surabhi Namaha. Seeking the blessings from the divine presence of our beloved Gurudev, bowing at the feet of Paramatma Swarupa, Dattatreya Maharaj, Dattatreya Mahaprabhu, all the masters of the Kriya Yoga lineage, whose divine presence is being felt here, and bowing thousand times at the four noble feet of Mother Surabhi, I bow, seeking permission from Sri Guruji and all of you at the lotus feet of revered, most worshipful Dattasharanandaji Maharaj, Pathmeda Maharaj. I look upon him as the king of Nandgaon. I am reminded of the story, the historic story of the Mahabharata age, when Nandgaon was a city, the capital of a Janapad, where Nanda Maharaj, the king, looking after the welfare of the mother cow. At two divine points of the history of India, Lord Sri Ram and Lord Sri Krishna gave more attention to the protection and the welfare of the mother cow. And in recent time, revered Swamiji has given utmost attention to the protection and the welfare of the mother cow. I had visited this place. Every day, every year, this place is taking place, blooming to a new form of beauty, an oasis in the divine desert of Rajasthan. Encircled by the little mountains, this beautiful valley has coached beautiful number of mother cows. Friends, mother cow. Mother cow and Kriya are both related. And I call upon revered Swamiji to bless us. It is required to talk a little bit about Maharaj. Towards Swami Dattasharanandaji Pathmeda Maharaj, nobody can describe him, an indescribable colossus. The beginning of his life started in search for the divinity, going to this place and that place to search for the divinity. Suddenly comes across a bunch of helpless mother cows, and
that gave the turn in his life, a transformation in his life, and he dedicated his life to the cause of the welfare of the mother cows. For a handful of number of cows today, thousands and thousands of cows here and there, and Pathmeda. And not only that, at various surrounding villages, all are taking care of the mother cow. Pathmeda is a name in the annals of the mother cow. Nandgaon is another name in the history of the welfare of the mother cow. Time is flowing by. Let us pray to the beloved Gurudev, pray to all gods and Gurudevs that this mother cow can be protected today and tomorrow. We seek his blessings. Another aspect, my Sri Guruji and we all his followers had no idea as to what this indigenous cow and the importance of its glory. When my revered Sri Guruji came over here and in good company, beautiful company of the Maharaj, he came across this particular beautiful aspects of the mother cow, indigenous Indian cow. And that is the beginning of our dedication and devotion to the mother cow. Go Navaratri is another concept is being popularized by Pathmeda Maharaj. For about many, many years, there is a lapse. People had forgotten in India that mother cow can be celebrated. Cause of mother cow can be celebrated 9 days long with due devotion for the purpose of calling upon the people of India, the people of the world to take care of the mother cow. महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम. हमारे प्रिय गुरुजी और हम सब बाबा की गौ माता की प्रीति आराधना सब देखकर हमारा जीवन में एक मोड़ पर आ गए. हम गौ माता की पूजा के लिए संकल्पबद्ध हूँ. वही दिन जब श्री गुरु जी बोले देखो गौ माता की सांस कैसे सुंदर है, हाउ सिमेट्रिकल इट्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो भी क्रिया है. इसीलिए तो गौ माता प्राचीन भारत में और 200, 300, 400 साल पहले भी सबके घर में थे. जब गौ माता के मुख दर्शन करके शुरुआत होता है दिन, तब जीवन मंगलमय होते थे. गौ माता की सांस के वाइब्रेशन तरंग, सांस के तरंग क्रिया तरंग है, मंगल तरंग है. जिस ये घर में गौ माता रहते हैं एक घर के दुख दूर हो जाता है. आज खेद की बात है, भारत में रहकर भारतवासी को बोलना है गौ माता के प्रति ध्यान दो, गौ माता के प्रति ध्यान दो. शेष वक्तव्य बोलकर मैं वाणी को विराम देता हूँ. जब श्री गुरुजी न्यूजीलैंड गए थे, चाहते तो बार बार, एक बार गुरुजी को मालूम हो गया न्यूजीलैंड सरकार ने मना कर दिए है, बच्चों को, हमारा देश के प्यारे बच्चों को जर्सी गाय के दूध नहीं दिया जाएगा. एक किताब भी लाए थे गुरुजी. ये किताब को पढ़कर भी मन में आ गया कि विचार, अरे सच तो वो तो गाय नहीं है, संस्कृत में इनको गवय बोलते हैं. इसी प्रकार से हम आज से ये चमत्कार जो उपवन है, उपवन में संकल्प को दोहराते हूँ. हम गुरुजी और पथमेड़ा महाराज के आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे. जय गोपाल, जय गुरु, जय गौ माता. राम 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 राम. पंचगाव समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तु यानन्दा तस्य दिव्ये नमो नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः.
गुरुर्साक्षात् परिब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्याप्तं सर्वमिदं जगत्स्थावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर एवं बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। और हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। शूरभि शरणं 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 शूरभि
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हर शरणं शरणं हरि हर शरणं। गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की। कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम। जगन्नाथ जी भगवान की। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं। उनका पावन स्मरण करते हैं। उन्हीं की प्रतिनिधिभूता धरती पर वेद लक्ष्मणा गौ माता का वंदन करते हैं। महान पुरुषों की महान परंपरा में दीक्षित एवं उस परंपरा का निर्वहन करने वाले महाअवतार बाबा से लेके महाशय लोहड़ी महाशय और बाबा परमहंस स्वामी हरिहरानंद जी, उन सब के आशीर्वाद से ओतप्रोत और उन सब का संयुक्त प्रतिनिधित्व करने वाले परम पूज्य परमहंस स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज, उनके सभी शिष्यगण, साथीगण, शिष्यगण, सभी संतों को सादर सप्रेम प्रणाम नमन एवं भारत तथा भारत के बाहर से पधारे हुए सभी कर्तव्यनिष्ठ आत्म जिज्ञासु परमात्मा के प्रेमी सज्जन बंधुओं बहनों माताओं सबको सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय गौ माता जय गोपाल। यह परमहंस जी महाराज की और उनके सभी साथी शिष्यों की उदारता है कि हमारे संक्षिप्त आग्रह पर प्रतिवर्ष होने वाले वैश्विक शिविर को श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में आयोजित किया है। यहाँ बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। रहने का आवास, भोजन, बैठने का, ये सब सामान्य है, ग्वालों जैसा। हमने सुना कि ब्राज़ील के बहुत सारे लोग इसमें आए हुए हैं। कल स्वामी जी ने हमको बताया था, ब्राज़ील में बहुत गाय हैं और बहुत गोचर जंगल हैं। हमको ब्राज़ील आना है, स्वामी जी के साथ आएंगे।
तो पर वहाँ हम ये इसलिए बता रहे हैं कि भाई अगर आपके वहाँ गाय बहुत है तो आप ग्वालों को समझते होंगे। ग्वाले का मतलब होता है गाय की तरह ही रहना, उठना, बैठना। गाय के पास कोई रहने को बिल्डिंग नहीं होती, बैठने को सोफा नहीं होता, और भोजन के लिए भी टेबल चेयर आदि नहीं होते। इसी तरह हम लोग गाय के साथ रहते हैं और गाय की तरह ही जीवन जीते हैं। हमारा विश्वास है कि ये जो गाय हैं वेद लक्षणा गाय, जिसके ऊपर ककूद हैं, लटकता हुआ गलकम्बल हैं, ऐसी गायें इस धरती पर परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो सृष्टि का रचयिता है, सभी उत्पत्तियों का आधार है और सभी देखने वाली चीज़ों का प्रकाशक है, उस परमात्मा में जो सात्विकता है, जो पवित्रता है, वही पवित्रता, वही सात्विकता वेदलक्षणा गौ माता से मानव जाति सहित संपूर्ण जीव जगत को प्राप्त होती हैं। वेदलक्षणा गो अपने श्वास प्रश्वास से, अपने स्पर्श से, अपने पंचगव्य से सभी देहधारी प्राणियों को वह सात्विक जीवनी प्रदान करती हैं। अतः गौओं के मध्य रहना, उनकी सनिधि में रहना, उनकी सेवा करना और उनके वात्सल्य से प्राप्त पंचगव्यों का जीवन में उपयोग करना, ये सब सतोगुण को बढ़ाने वाले हैं। आत्मा का अधिष्ठात परमात्मा शुद्ध सत्वमय हैं। उनकी अनुभूति और प्राप्ति के लिए मनुष्य को सात्विक गुण से संपन्न होना पड़ता है। जीवन में सतोगुण का विकास करना पड़ता है। ये ही पुरुषार्थ है। सतोगुण का विकास करना ही पुरुषार्थ है। सतोगुण विकसित होने के बाद वो परम सत्य से अभिन्न होने में, उनकी अनुभूति करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं आती। सतोगुण को बढ़ाने का, अपने चेतना को सात्विक बनाने का, उसको रूपांतरित करने का दो आधार है। एक शब्द है, एक आहार है। शब्द मानी वाणी, सद्गुरु के सदुपदेश से मनुष्य की अंतर चेतना का रूपांतरण होता है, भावों की शुद्धि होती है। भावों की शुद्धि होने से सतोगुण की वृद्धि होती है। पर ये बढ़ा हुआ सतोगुण धारण करने के लिए सात्विक अंतःकरण की आवश्यकता है। अंतःकरण की शुद्धि, उनकी पवित्रता और उनमें सत्व शुद्धि आहार पर निर्भर है। अगर आहार शुद्ध हैं तो अंतःकरण भी शुद्ध होगा। भारतीय आर्ष ग्रंथों में ये बात कही गई है कि आहार की शुद्धि से ही सत्व की शुद्धि होती है और सत्व की शुद्धि से ही मनुष्य की स्मृति जागृत होती है या दृढ़ होती है। जो कुछ हम सद्गुरु से सुनते हैं, उनके आशीर्वाद से अनुभव करते हैं, उस स्मृति को निरंतर बनाए रखने के लिए सत्व की शुद्धि आवश्यक है। सत्व की शुद्धि का स्रोत आहार है। आहार 3 प्रकार का है। सबसे अधिक श्वास के द्वारा हम आहार लेते हैं, प्राणों से।
दूसरे नंबर का आहार जल है, पानी। और तीसरे नंबर का आहार दुग्ध, फल, अन्न आदि हैं। ये 3 तरह का आहार है। ये तीनों कैसे हैं? इस प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये सारा जगत त्रिगुणमय हैं। ये तीनों गुण मूल प्रकृति के कार्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार आदि जो अष्टधा प्रकृति है, उस प्रकृति की भी जो मूल प्रकृति है जिससे सृष्टि का सर्जन होता है, उस प्रकृति का कार्य तीनों गुण है। ये तीनों गुण प्रत्येक पदार्थ में कम ज्यादा रूप में मिलेंगे। वृक्षों में, लताओं में, अनाजों में, देहधारी प्राणियों में, सूक्ष्म और स्थूल जितना भी जगत है वो उनमें ये तीनों गुण, किसी में कम, किसी में कोई गुण कम और किसी में कोई गुण ज़्यादा, पर ये तीनों गुण सब में मिलेंगे। कोई तमोगुण प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है, कोई सतोगुण प्रधान है। एक की प्रधानता और 2 की गुणता, ऐसा होता है। परंतु वेद लक्षणा गाय एक ऐसा अलौकिक अपराकृत प्राणी है जिनके अंदर यहाँ जो उनका तीनों गुणों का तारतम्य देखा जाए तो वो इस तरह एक गुण की प्रधानता और 2 गुण की गौणता ऐसी न हो कि शुद्ध सत्व गुणमयी है। जैसे प्राणियों में अश्व है, गज है, हिरण है, खरगोश है, ये सतोगुण प्रधान है। अंश है, कपोत है, ये सतोगुण प्रधान है। रजोगुण और तमोगुण इनमें गौण रूप से है। वृक्षों में अश्वत्थ, वट, गुलर, तुलसी आदि सतोगुण प्रधान है। तमोगुण, रजोगुण उनमें गौण रूप से है। ऐसे अन्य अन्य प्राणियों में तमोगुण, रजोगुण प्रधान है और अन्य गुण गौण है। पर गौ माता में शुद्ध सत्व गुण है। कैसे? जैसे जितने भी प्राणी इस धरती पर देह धारण करके आते हैं, उनमें तीनों गुणों का कम ज्यादा होने से सात्विक प्राणी, मनुष्यों में महापुरुष, संत, सद्गुरु, ये सात्विक से सात्विक माने जाते हैं, सतोगुण प्रधान। परंतु इनके शरीर से निकलने वाला मल और मूत्र अशुद्ध माना जाता है, मलिन और अपवित्र माना जाता है। पर वेद लक्षणा गो माता जो शुद्ध सत्व गुणमयी है, उसका मल और मूत्र मलिनता को और अपवित्रता को मिटाने वाला है। अगर गौ में रजोगुण और तमोगुण होता तो उसका मल मूत्र शुद्ध और पवित्र नहीं कहा जाता। गाय के मल मूत्र की शुद्धता और पवित्रता ये सिद्ध करती है कि गाय शुद्ध सत्वमयी है। प्रकृति में निर्मित सभी प्राणियों से उनका पिंड एक भिन्न तरह की शक्ति लेके धरती पर है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले पथिकों के लिए अंतकरण की शुद्धि, सत्व की शुद्धि, भावों की और भूतों की शुद्धि अत्यंत अनिवार्य है। उनके बिना अध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं होता।
ऐसी सात्विकता प्राप्त करने के लिए सद्गुरु प्रदत्त साधना भावों की शुद्धि करती है, पर शुद्ध किए हुए भाव और भावों की स्मृति दृढ़ करने के लिए अंतकरण के सत्व की शुद्धि की आवश्यकता है। और वह सत्व शुद्ध आहार से होता है। हवा शुद्ध सात्विक हो, जल सात्विक हो, अन्न सात्विक हो, तो ही सत्व की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, भूतों की शुद्धि होती है। हवा को, जल को और अन्न को, तीनों को सात्विकता गौ से प्राप्त होती है। गौ के घृत से दीपक करने पर, यज्ञ करने पर, धूप करने पर हवा सात्विक जीवनी शक्ति से संपन्न होती है। गौओं के चरण स्पर्श से, उनके गोमूत्र के मिश्रण से जलजन्य विकृतियों समाप्त होके जल शुद्ध और सात्विक रस प्रदान करने वाला बनता है। गौ के गोमय की खाद से और उनके चरण चाप से धरती सात्विक बनती है। सात्विक उर्वरा से संपन्न धरती से उत्पन्न अन्न, फल, सब्जियों सात्विक कहलाती है। इस तरह से तीनों प्रकार का सात्विक आहार मानव जाति को वेद लक्षणा गौ से प्राप्त हो सकता है। इस धरती पर अधिक संख्या में गौवंश रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे, तो धरती सतोगुण प्रधान हो जाती है। गायें दुखी रहे, प्रताड़ित रहे, भूखी रहे, तिरस्कृत रहे, तो धरती में तमोगुण बढ़ता है। पृथ्वी पर तमोगुण की वृद्धि होती है। कीटनाशक, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम पदार्थों जलाना, इन सब से हवा, जल और धरती, ये तीनों ही तामसी हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। इनका तमस मिटाने के लिए, इनके दोषों को मिटाने के लिए, इनकी अपवित्रता को मिटाने के लिए वेद लक्षणा गौ की आराधना, उनका संरक्षण, उनका समर्थन, उनका पालन और उनसे प्राप्त पंचगव्य का जीवन में विधिपूर्वक विनियोग करना अति आवश्यक है। हम तो कोई प्रवचन करना नहीं जानते हैं। हमें परमहंस जी ने क्या कहते हैं उसको हम समझते नहीं हैं, पर जैसे हमारे योगी लोग कहते हैं शक्तिपात, तो बैठ के पास में शक्तिपात कर रहे हैं बोलने के लिए। अभी तो हम केवल दर्शन करने के लिए आए थे और कल कुछ आपकी सेवा में निवेदन करना था, पर आज ही महाराज जी ने कहा कि कुछ बोलिए। तो पहली बात आपसे निवेदन है कि आप गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, सद्गुरु के उपदेश के अनुसार साधन भी करते हैं। आहार शुद्धि का जो आग्रह है हमारा, उसको आप समझें, चिंतन करें। आज इस देश में और दुनिया में लाखों लोग आध्यात्मिक साधनाएं कर रहे हैं और आध्यात्मिक साधना के सभी उपदेश सबको सुलभ है, पुस्तकों के माध्यम से, और आजकल तो ये टेलीविज़न, दूरदर्शन, ये सब इनके माध्यम से गंभीर से गंभीर रहस्यमयी बातें हर एक भाषा में दुनिया के लोगों को प्राप्त है। गीता इस धरती का सर्वोपरि आध्यात्मिक ग्रंथ है। वह गीता मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, पर सैकड़ों भाषा में उनका अनुवाद धरती पर है। उस गीता में सारी बातें, आध्यात्मिक साधना की सुलभ से सुलभ बातें उनमें है। धरती पर जितने भी गुरु होंगे वो सब उस गीता रूपी ज्ञान से ही आवृत होंगे, उसी ज्ञान की व्याख्या करने वाले होंगे। ये सब होते हुए भी जैसा
चेतना का रूपांतरण होना चाहिए और इसी जीवन काल में सत्य के अंतिम शोर की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। दशकों तक ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं, फिर भी वहीं के वहीं साधक खड़े हैं, मन नहीं लगता है, चिंतन होता है, नींद नहीं आती है। इस तरह की अनेक शिकायतें साधक लेके उपस्थित होते हैं। कारण यही है कि उपदेश से, अध्ययन से भाव तो शुद्ध होते हैं, पर भावों को शुद्ध करने का, भावों को धारण करने का जो आधार है, भूत अंतकरण, वह शुद्ध न होने से भाव दृढ़ नहीं होते, स्थिर नहीं होते। ये पिछले 5-7 दशकों में भारत में भी हो रहा है। आज से 50-60 साल पुराने जो भारत में आध्यात्मिक साधक थे, वे अपनी साधना से चेतना को जितना ऊंचा ले जाते थे, जितना विकसित करते थे, जितना ऊर्ध्वगामी करते थे, इतना वर्तमान के साधक चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। उनमें जितना धैर्य, संयम, निष्ठा आदि होते थे, इतनी निष्ठा पिछले 50 सालों में जन्मे साधकों में नहीं है। इसका कारण अशुद्ध तामस आहार है। इसलिए आहार शुद्धि का आग्रह हम सबसे करते हैं। क्रिया योग की साधना करने के लिए आप जिस परिसर में पधारे हैं, यह स्थान ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की तपस्थली है। आपने सुना होगा, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के कुल गुरु थे, रघुवंशियों के कुल गुरु, कुल पुरोहित थे, राज पुरोहित। उनकी यह तपस्थली है। उनकी गौओं के चरने के लिए गोचारण स्थली है। श्री वशिष्ठ जी की प्रधान गौ माता नंदिनी गौ माता का ये विहार स्थल है। भारत के 68 तीर्थों में ये आबू तीर्थ की भूमि है और अनेक अरण्यों में एक महान अरण्य अरुबदा अरण्य इस क्षेत्र का नाम है। हिमालय के पुत्र अर्बुद और नंदीवर्धन, इन दोनों भाइयों का ये आवास स्थल है। माउंट आबू को ही अर्बुद को ही माउंट आबू कहते हैं और नंदीवर्धन ये पर्वत है जो फैला हुआ है। इनके मध्य में अरबदारण्य के क्षेत्र में गोधाम पथमेड़ा ने मनोरमा गोलोक तीर्थ की स्थापना की है। स्वामी समर्पणानंद जी ने, संपूर्णानंद समर्पण होता है, वो ही संपूर्ण होता है, इसलिए समर्पणानंद जी ने आदि गो माता मनोरमा ऐसा कह के संबोधित किया। आपने किया? आपने किया। तो गोधाम मातीर्थ पथमेड़ा का ये गौ सेवा महाअभियान जिन 8 गौ माताओं से प्रारंभ हुआ था, उसमें एक मनोरमा नाम की गौ माता थी। उसी के नाम से ये जगह है। उन्हीं की 21वीं पुत्री श्री समृद्धि गौ माता का यहाँ पूजन होता है, प्रत्यक्ष पूजन। अभी वो विराजमान है। उन्हीं का ये चित्र है जो दीपक के सामने, वो वहाँ आनंदवन क्षेत्र में है। ज़्यादा मानिती हैं, इसलिए उनकी इच्छा हो तो इधर उधर ले जाते, नहीं तो वो जहाँ रहती वहीं प्रसन्नता से रहे, वहीं उनकी पूजा होती। यह जगह गोचारण की दृष्टि से तो उत्तम है ही है, पर साधना की दृष्टि से बहुत उत्तम है। एक तो वशिष्ठ जी की तपभूमि है, दूसरी नंदिनी की विहार भूमि है, तीसरा इस समय यहाँ 10,000 गोवंश, 10,000 के आसपास वेद लक्षणा गोवंश इस परिसर में उपस्थित है। यहाँ गत वर्षों में कई यज्ञ हुए, वैदिक यज्ञ हुए और वैदिक परंपराओं में गायत्री मंत्र को सर्वोपरि माना गया है
उसका यहाँ 33 पुरुष चरण हुआ विधिवत ढंग से। इस तरह से इस भूमि में खूब आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है। सद्गुरुदेव के उपदेश से आपको सहज ही ध्यान लगेगा और जिस स्तर की आपकी दीक्षा है वहां से आपकी चेतना भारत की राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ेगी, ऊर्ध्वगामी होगी। मुझे पता नहीं और भी कोई तेज गाड़ी होगी, क्योंकि ग्वाले है तो ज्ञान सीमित है, जानकारी सीमित है। खूब तेज ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं और आप अनुभव करेंगे कि आपके नाभि में, आपके मूलाधार चक्र में छुपी हुई चेतना का ऊर्ध्वगमन और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्ध आज्ञा आदि का स्पर्श करते हुए आपकी चेतना सहस्रार तक पहुंचेगी। सामने परमहंस स्वामी हरिहरानंद जी के वाक्य लिखे हुए हैं, शीरस पर भारीपन का अनुभव करें शीश पर, वह अनुभव अपने आप होगा। आपको केवल दृष्टि डालनी, आपकी जैसी दृष्टि मस्तक की ओर जाएगी तो आप मस्तक पे प्राणों का स्पंदन और आनंद की अनुभूति करेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 10 साल बाद में, 5 साल बाद में, अभी इन 7 दिनों में आपको एक से एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभूतियां होगी, अपूर्व आध्यात्मिक अनुभूतियां होगी। वो आप नोट करना और गुरुदेव को बताना, और गुरुदेव से प्रार्थना है कि वो हमको भी सुनाए कि कैसी कैसी अनुभूतियों साधकों को इस भूमि पर हुई। अपूर्व, आज से पहले जो आप आध्यात्मिक अनुभव पुरुषार्थ करने पर भी नहीं प्राप्त कर सके, वो अनुभूति आपको यहाँ सहज होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और ऐसी ही सद्गुरु परमात्मा से अपेक्षा है कि देश और दुनिया से आए हुए आध्यात्मिक साधकों को उन्हें आध्यात्मिक आहार दे के पूर्ण तृप्त करें। इसी सद्भाव के साथ वाणी को विराम देते हैं। पूज्य परमहंस जी को एवं सभी संतों को प्रणाम। आप सबको सादर हरिस्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। नारायण नारायण नारायण। I bow to Almighty God and all the masters, all the saints and sages. I humbly bow to Guruji and Pathmeda Maharaj and Swami Samarpananandaji. We heard a beautiful discourse, inspiring discourse from Pathmeda Maharaj. It's my privilege to give a gist of this beautiful talk. Pathmeda Maharaj ji said, he began with a beautiful prayer that God is omnipresent. So, bowing to Holy Mother Cow, bowing to God, he began his beautiful discourse. He said that in this beautiful Manorama Golok Tirtha, this place of pilgrimage, not many comforts are available as you have been availing in your own places. He told that in Brazil there are many cows and also forest or pasture land. So he wants to visit Brazil with Guruji. And he says that because in Brazil they have cows, so they can understand better, as cows do not have any chairs or sofa. So the people who live here with less comforts, they live like the cowherds. Pathmeda Maharaj mentioned that cow has dewlap and hump. That is the real identification of the holy cow, which we call Deshi cow. And in Texas, USA, we call them Brahmin cow. So they are the real cow. And he said Veda Lakshana, means in the Vedas there are some signs
mention that who is a real cow. So one who has this dewlap, galakambal and hump in the back is the cow. Cow gives a sattvic life to humans. To serve the mother cow, to worship the cow, and to take Panchagavya, the 5 nectars we obtain from the Holy Mother Cow. It increases sattvic quality in us. It is necessary to increase the sattvic quality in life, and that is called Purushartha. If we increase sattvic energy, sattvic nature, we can attain our goal of life easily and reach the height of our sadhana, that is self-realization. The basis of spirituality, Maharajji mentioned that there are 2 things. One is purity of our bhava, our attitude, and second is purity of our food. Purity of mind and memory, it depends on purity of our food. And so there are 3 types of food we receive by our breath when we inhale, so that is our food. Second is water. Third is the food, solid food in the form of fruits and milk. Maharajji mentioned there are 3 qualities, and we know that this nature is made up of 3 intrinsic qualities, sattva, rajas and tamas. So also each object, each person's body is made of these 3 qualities. Bhagavad Gita says that this world is made up of 3 qualities, sattva, rajas and tamas. Every matter, every object has these 3 intrinsic qualities, more or less. But in cow, the mother cow, only sattvic quality is manifested fully. Maharajji said that in animals also there is category. Some animals are sattvic, rajasic, and some are tamasic. Just to tell you sattvic, because we are emphasizing here on sattvic nature. Sattva means the quality of balance, purity. So animals, humans and trees also, they can be categorized as sattvic, tamasic or rajasic. But in case of cow, there is no question of rajasic or tamasic. Cow is only sattvic in nature. In humans also, saints and sages, even the masters, they are sattvic. But if we talk about the excreta, it is called impure. But in case of cow, even the excreta of cow, like the cow's urine, cow dung, it is the most sattvic in nature. Inner instruments, as we have mind, memory, intellect and ego. So inner instruments, our elements, our bhava, attitude, feelings, all must be pure and sattvic. And all this purity depends on the mother cow. Cow's ghee is used in our fire ceremonies, yajna. Also when we light a lamp, we use cow's ghee, and cow's ghee generates sattvic energy. Many times we see that we use oil. So when we use oil, oil is producing the rajasic waves. And in the West, usually we use some wax. Wax is considered as tamasic. But we should use ghee. Cow's urine, gomutra, cow's milk, they all give good health to human being. When we take them, cow dung is used in farming, and nowadays we are emphasizing on organic farming. Even in the West, people are slowly turning to that. When we use cow dung, we get sattvic food, and in turn we get better health. Cow's presence and happiness increases sattvic nature, and if the mother cow is unhappy, sad, then it also increases unhappiness and tamasic nature on the earth planet.
So to purify the forces of nature, we must worship the cows and use their products, milk, yogurt, ghee, and so on, in the form of Panchagavya. You are going to take it from tomorrow. So it all will give us sattvic energy. Maharaj said that you are following the master, but you should also take sattvic food. In the modern time, media is helping to spread the message more and more. In Bhagavad Gita, it is said the knowledge, that we have all the knowledge. We get knowledge or information from Bhagavad Gita, but to transform our life, we need purity of mind and food. Unless our food is pure, our mind cannot attain purity. And when we listen to discourses, it purifies the mind to some extent, but in order to advance in our spiritual practice, we have to begin with sattvic food. Then Maharaj explained that knowledge or discourse can purify the feelings, our bhava, but it doesn't make it steady. So to advance in our spiritual life, we must use sattvic food. And this premise, this holy place, Golok Tirtha, Manorama Golok Tirtha, it is the sadhana place of sage Vasishtha. Then he also mentioned that this is the place where Nandini, the mother cow who lived in this Tirtha, and this place is also known as Arbuda Kshetra, the region of Arbuda, which is otherwise also known as Mount Abu. Manorama Gomata is considered as the Adi Gomata, the very first cow among the 8, and she is very much present here. This place is the best place for sadhana. We all do our sadhana, but you heard from Swami Dattasharananandaji also that when we are doing our spiritual practice in a holy place like this great place of pilgrimage, then our sadhana is not only intensified, but also we get multifold result. And why it is so holy? Because of the living place of Mother Nandini, cow Nandini, and many thousands of cows are living here, and in this place spiritual energy is fully manifested due to fire ceremonies. If you meditate here, you will have spiritual advancement. Maharaj ji mentioned the chakras, and so throughout the chakras, as we raise our spiritual energy, Maharaj ji said that in this place, in these 7 days when you are going to meditate sincerely and you will have many beautiful spiritual experiences. And he has emphasized this twice. So he also prayed that, as Gurudev has said, he quoted one quotation of Gurudev, in this retreat you will have spiritual experiences easily which you may not have in other place. Praying for all of you, praying for your spiritual advancement. Maharaj ji has blessed all of you. Thank you all. जय गौ माता, जोर से बोलो, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल. You all sit with eyes closed. आंख बंद कर दीजिए. नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः. त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदा नघे. पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये
tuya nanda tasyai devyai namo namaha. I will chant Sri Surabhyai Namaha. You all will repeat with love. Sri Surabhyai Namaha. 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 I bow to God as the Divine Mother. I bow to all the masters, all the saints and sages as the Divine Mother. I bow to all the holy books as the Divine Mother. And I bow to the divinity in all its forms and manifestation in the Divine Mother, Go Mata, the Holy Cow. I bow to Pathmeda Maharaj, whose name is Parampujya Swami Dattasharananandaji. I bow to all of you. Jai Go Mata, Jai Gopal. I'll speak in English. जरूरत हो तो अंतिम समय थोड़ा हिंदी में बोल दूंगा. Many people ask me why this program is going to be conducted in such a place. I will tell you a big change that came in my life. It was in the year 2012. Although I knew about this place since 2007. In the year 2007, during the chariot festival of Lord Jagannath, there was a program of Bhagavatam, discourse on the Bhagavatam by a renowned Vaishnava saint of India from Vrindavan, Malukpit Maharaj. I didn't know who he was, but as a divine plan, not coincidence, divine providence, for the inaugural program of this 7 days discourse, Gajapati Maharaj, the king of Puri, a renowned Vaishnava saint of Puri who is no more, Baba Chaitanya Charandas, and this humble self, we three were invited to light the lamp and to speak few words and then the program to continue. That was the beginning of the journey. When we met each other, this Malukpit Maharaj and myself, it was a common feeling of both of us
that we knew each other for a long time. He came to our Gurudev's ashram, and during his talk, he was talking on Gomata, the holy cow. Although his main theme was the Bhagavatam. And during this talk and casual discussion, he mentioned about this place and the Maharajji. It was 2007. 2012, after Mahasivaratri, I told the residents of ashram that I am going for some time in silence and seclusion. And many of you know I don't have mobile telephone. At that time I had internet communication, but by God's grace, since last 2 years I have also stopped that. However, how to come here, nothing is known. From internet, finding out a contact telephone number. Sampurnanandaji telephoned a person here and told that a monk is coming can you arrange for his stay and can you send a taxi to Ahmedabad airport to pick him up. That's all. That was the turning point in the journey. As I told you, the beginning was 2007. It took 5 years to come to this place. Now you are sitting here, there is no fan, although there is provision of fan. I told Maharajji, no. Shitosna sukha dukkheshu. If it is little hot, let us bear it with. So I chose the month of June to come here. April, May, I spent in Vrindavan. Although I lived in Vrindavan, Malukpit Maharajji also did not know where I was. And I was not talking. So I came here in the month of June. It was, you can't imagine how hot it was. So this was the time for my own inner transformation in some way. I will mention what happened. You all know me, my background with modern education. To me, the whole earth is the family, one family. To me, anybody belonging to any religion doesn't matter. God is one. We love God and it is one family. And this creation, it is also belonging to our extended family. So, to me, cow means anyone who is giving milk. Like buffalo is buffalo, cows, whether it is Jersey or Holstein, whether it is Ganji or Indian cow, holy cow, Gomata, to me it is all one. Although in my childhood we grew up with cows, we love, we adore. From childhood we respected the cow as the principal member in the family. I have seen my own mother's love for the cow. Cow means, when I tell cow, ox, calf, all. If the cow is old or the ox is old, very, very old, unable to move, my mother used to go with kerosene lamp 3 to 4 times at night, bowing down with tear, praying, you have served so much. We are really blessed with your presence. We all are praying, you can joyfully bless us and go to the divine abode. That was my mother's prayer. I have heard many times with tear in her eyes. However, when I came here,
slowly my thinking got transformed. I will tell metamorphosis. Then I came to know about lots of texts, work of the scientists from the West, A1, A2 milk. Even the Western scientists emphasizing the beauty and the value of A2 milk and the cows giving A2 milk. And slowly I got more convinced. I went to New Zealand, I collected lots of books. I love to read the books, and with background of science and background of economics. So I analyzed a lot, and through this inner transformation, I wanted to implement first in our ashram. I was not talking. I went back to ashram on Guru Purnima day, the evening before Guru Purnima. So I wrote to the residents, can I do this? Can we make our ashram first as a Govrati ashram? Everybody agreed joyfully. In the same year, in the month of December 2012, Pathmeda Maharaj. We call Pathmeda Maharaj, we don't want to take the name. It is not the proper way to take anybody's name with your mouth so much. Your own name, Atmanama, Gurur Nama. You should not take the Guru's name often with your own mouth. For example, my beloved Gurudev, if I tell Hariharanandaji told, Hariharan, it is no. Atma Nama, you should not take your name too much. Gurur Nama, Guru's name. Nama Patya Kalatracha, your own children or wife or husband's name. Shreyas Kama Nagrunhyat, one who wants to take or get inner development and prosperity, along with this name, should not take the name of the miser, selfish people. Namati Krupanasyacha. So, however, in the month of December, Maharaj came to Balighai and he stayed in Gurudev's ashram. 2013, we started our first Surabhi Mahayagya in Balighai. It was a special celebration ceremony in honor of the Divine Mother in the form of cow. And slowly the work continued, and as a result of this inner and outer movement, apart from our activities from our ashram to Odisha, then being involved with Maharajji in India, in USA, in our ashram in Texas, we first wanted to have one calf, one male and one female calf, calling them as the divine couple, Indian cows, and now we have 7. So those who have gone there, they have seen their beauty, their love, and even their presence in ashram has brought change in the life of people living there. So, being on this path, being with all of you, and I have been with
my beloved Gurudev since the year 1980. So 39 years. Gurudev left his physical body 2002, 17 years back. I have been traveling to all of you to different countries for more than 25 years. I feel myself a great joy to dedicate my life for the cause of the masters and cause of the mother cow, and we will discuss some other time. The mother cow implies the entire creation, ecology, health, happiness and prosperity of all. This place where we are sitting, its main place is in Pathmeda. So Pathmeda, you will be thinking, what is Pathmeda? Pathmeda is a small, unknown place 25 years ago, and now is a prominent place all over the world. People, those who are concerned about ecology, environment, health, happiness, prosperity, so people they know. Pathmeda has become such a well-known place, and one day we'll visit there. We'll go there in the morning, till evening we'll stay there, and we'll come back here, spending whole day there. So that place, as you heard, it was started on 17th September, I think, in the year 1993. So this place, as you heard this morning, was started in the year 2005. 2005. So that place is the main place where 8 cows and few non-milking cows, with that the movement or the transformation started from that place. And that place has become the place of inspiration to countless people all over India and even people from outside India. When I came first time, I was not talking, I was staying in my room with my computer, scriptures, books, reading and writing, going in the morning when there is Arati, the Vesper for the 5 cows in the morning, taking every day Panchamrita, Panchagavya, 5 things coming from the cow. From tomorrow you will have in the morning. So slowly we interacted, and when I was walking, seeing so many cows at one place I never saw in my life, it reminded me of Lord Krishna, his time, and how the cows were taken care of and who lived joyfully, peacefully. And last year was actually the completion of 25th year. As you know, in West we celebrate Silver Jubilee, Golden Jubilee, Diamond Jubilee. So like that, so 1 year's celebration of completing 25 years of these activities, Maharaj told me, why can't you have one Kriya Yoga program during this 1 year celebration? I came back, I talked with the residents, can you have program? They all agreed. And the wish or the seed of thought
by Maharajji and by the watering of the residents. And this program has come to this shape, although I had even little bit thought that it will be even a bigger program. However, blessed are those who have come to this place. Even more blessed, every day we'll have 3 times Kriya Yoga meditation. Every day we'll have time to walk around and to see. Today we walked quite a little bit more, but we'll have different plans for different days. We'll have satsang and question and answer every day. And as Swamiji told, Maharajji told that what is the significance of meditating in a place like this? First, let me tell you these words of the scriptures. It is said, Gosthe Sataguna Smrutam. If you chant a holy name or take a breath remembering God, one breath, in a holy place, it gives 10 times result. But where, the place where the cows are living peacefully, joyfully, there, if you meditate there, you get 100 times. It is written in scripture 100 times the result, but I will tell 100 is very little. It will give you ananta phala, infinite result. Once you are taking the name of God, it is giving you manifold, not 100 times. So also meditation. One thing which Maharajji told, our Swamiji Atmavidyanji, he spoke in very condensed form. Maharajji told, if you look at the 50 years history of humankind, and especially India. India is a land of spiritual people. If you think of 50 years ago, how many great people? If you go 100 years back, 150 years back, and Maharajji told, take only 50 years ago. So many renowned spiritual people were there, saints and sages. If you tell me to take the name, I can take 50 years ago those who lived. I can take name of at least 50 holy people, very powerful people living in this country. Very, very powerful people. But what happened to them? What happened to us? Why we cannot have such type of vibrant, spiritually charged divine beings? Why not? Not only in spiritual field. If you think 50 to 100 years in India, in the field of social activities, in philosophical activities, in political activities, beautiful persons were born in this country. Why not now? What happened? A question mark. And the question mark's answer, Maharaj is telling only food. Only food. Within these 50 years, you will tell the world has developed. And to me, and to many, the world has not really developed. Instead of progress, although it is appearing outside, the world is progressing, the world is not progressing. You will ask how? Look at the ecological imbalance. Look at pollution everywhere. Look at health and unhappiness of people. Look at extinction of many species, including vulture. Will you tell that the world is progressing? Global warming, sea water level coming up. Many cities are in the warning of danger to be
underwater, and so on. Will you tell that the world is progressing? The joy and happiness in family is lost. Peace and calmness of people is becoming a dream. So, however, whatever problem you will tell, we are facing or we are going to face, for all problems, there is only one solution. I am not talking as a dogmatic person. There is only one solution for all problems, and which we might discuss during these days. We should learn to be grateful. The modern human civilization is the most ungrateful civilization. We are truly ungrateful to our parents, to our family, to Mother Earth, to Mother Cow, to this entire creation, ultimately to God. We are ungrateful, and we should change our attitude. Attitude of gratitude, manifestation of love. So, I am happy that you all have come. You have come from many different countries and different parts of India. Those who have come from outside India, and many for the first time. India is a very typical country. Many times I told, either you love or you will hate, no in between. And those who have truly seen or felt the beauty of India, the soul of India, the heart of India, the breath of India, there is no way but to love. I will tell you one story from my life. When I was young, a schoolboy of 13, 14, I read a book. It was written by one young lady, American lady, but translated into Odia. I was 14, 15 years old. But I remembered the book and its theme. So 14, 15 years means in 1970s. So you think 30 years after, in 2008 or 9, I was sitting in Dallas. I was talking to some kriyavans about this book. I told I don't know the name of the book, name of the author, but the author was the daughter of US ambassador to India. Nowadays, the internet age, somebody went up and came down in few minutes. He said, the name of the book, At My Home, India. The author is Cynthia Bowles. And searching in internet, the book is out of print. One old copy the person has ordered for me. So I came back to Miami. Then I was talking about the book came. I told about Cynthia Bowles, and who came to India, you imagine in 1950s. It is more than 60 years ago, 65 years ago, she came to India as a 14 years young girl. And when she came to India, they were shown a movie about India as a country of jungles, snake charmers, people are uncivilized, uncultured. This type of picture was shown in a movie because you are going there. And when they landed in Delhi, the picture which they had, they saw Delhi is a quite big city. It is. So she started studying in school. All her elders and younger siblings stayed back, but she came to India and she finished her high school in India, then studied in Shantiniketan in Bengal. During those days in 1950s, she went to villages. At that time, there was no toilet. She was going out with her friends. And she wrote a book, At My Home, India,
at the age of 19. She wrote this book. And during those days, that book was quite popular. Do you know, we step one step further. What happened? So when I was talking about this book and this, my memory, so telephoning, finding her name, searching in internet, finding her family. Her father was governor of New York. And he was ambassador to India, US ambassador to India. So finding her home address, telephone number, calling there, and nobody answering, speaking to answering machine, and we got a call back and telling that she is no more there, she is married and lives in Boston, and finding her telephone number, and I talked to her. When I talked to her, she was so happy. She was really excited. She is in her 80s at that time. I don't know if she is alive or not. She said, I love India. I have gone few times to India. I have no children, but I have adopted a girl from India. I brought her. And so, why I told this story? You have come to India. One young girl from USA in 1950s coming here, telling that India is my home. What is there in, you will see India, dirty, crowded, this, that. If you look like this, your head will be really confused. India is a very, very special land. I am not advertising India. If you understand the heart and soul of India, I will tell another story, incident, and then I will speak a little bit in Hindi. There is one British lady. She came to India. She loved India. She loved the Ganga. She lived in the Himalayas. Her master was a very prominent sadhu of India. His name is Mastaram Baba. And she stayed back. She's now completely Indian. Every day taking dip in Ganga, taking care of the cow, taking care. And once she fell sick. And she was so sick, she was to be hospitalized in Delhi. Her guru told once that don't think that Ganga is far away. Even if you are in hospital, you just, when you are having water, you think of Ganga. Ganga is everywhere. The spiritual aspect of Ganga is not just in the river. And she was narrating herself near me. She told when she came back, she was coming by bus. Just little before Haridwar, when she had the vision of Ganga, she started crying so loud. Everybody in the bus thought what happened to her. One Western lady crying so loud because she was so many days away from Ganga and she is seeing her mother. Culture of India, its spiritual tradition, practices of India, its beauty, which cannot be described in words, but can be felt in heart. You will be staying here for coming 7 more days. You will have more experiences to conclude with Maharaj's statement. You can make note of your own spiritual experience in this place. Meditate, you see what is the feeling in this place. On the closing day, you can tell your own experience really what is happening. This is the place of Sage Vasishtha. This is the playground of Mother Nandini. And this mountain range which we see is the son of the Himalayas, whose name is Nandivardhan, and Abu is Arbudachal, the other brother. So, welcoming you, our love and prayer for all of you. थोड़ी सी हिंदी में
2012 मेरे जीवन के एक अनोखा मुहूर्त, जब मैं मौन होकर आश्रम से निकला, 2 महीना वृंदावन में रहा और उसके बाद मैं पथमेड़ा आया। किसी को अपना परिचय नहीं दिया। यहाँ आने के लिए टेलीफोन से मैंने नहीं, संपूर्णानंद जी, यहाँ जानकी गुप्ता, उनसे बातचीत की और एक टैक्सी भेज दी। हम आकर पथमेड़ा में रहे, चुपचाप रहे। वहीं से मेरे जीवन में एक अद्भुत क्रांति आई। बचपन से जो सोया हुआ संस्कार था, आधुनिक समाज का जो संकट है, और उसी समय से शुरू हुआ मेरे अध्ययन और अनुशीलन, सिर्फ शास्त्रीय विचार नहीं, आधुनिक वैज्ञानिक विचार के साथ, अर्थनैतिक विचार के साथ, और महाराज जी के प्रेरणा, उनके चिंतन, उनको अपने जीवन में अपना लिया। और पहले तो खुद गोव्रती होने का प्रयास करता हूं। उसी साल बालीघाई आश्रम को हम गोव्रती बनाए। उसी साल दिसंबर महीना को महाराज जी बालीघाई आए। 2013 को प्रथम सुरभि महायज्ञ आश्रम के परिसर में, 14 को हम उड़ीसा के 30 जिले के 33 स्थान पर हम प्रवास किए। 2015 को हम 30 जिले के 120 स्थान पर हम प्रवास किए। और कुछ भक्त लोग ने क्रिया योग के साधक साधिकाओं के बीच में किसने बोला कि बाबा के दिमाग गड़बड़ हो गया और बाबा ने क्रिया योग छोड़ करके अभी गाय के पीछे दौड़ते हैं, गो योग अपना लिया। क्या हो गया उनका? किसने उनका दिमाग गड़बड़ कर दिया, तो ऐसे ही बोलने लगे कुछ। तो बाबा का दिमाग तो बचपन से गड़बड़ है, नहीं तो बाबा क्यों ऐसा होंगे। तो उसी समय से जो अपने अंदर वैचारिक क्रांति, अपने भीतर आहार के लिए जो परिवर्तन, और गौ माता को लेकर अपने आचरण और उच्चारण, उसको साथ में लेकर गुरुदेव के पूर्ण सहमति से, आप बोलेंगे कैसे सहमति पाए, तो सहमति में अपने खुले आंखों से गुरुदेव के गो सेवा हम दिखे हैं। खुले आंख। आश्रम में गुरुदेव बोलते थे कि आश्रम के सौंदर्य गौ माता और संत। जिस आश्रम में गौ माता नहीं है वो आश्रम नहीं है, गुरुदेव ही बोलते थे। और आपको बोलने के लिए, गुरुदेव जब अमेरिका में मायामी में आश्रम शुरू किए, उनका विचार था गाय रखने के लिए। गुरुदेव हैड द ड्रीम टू हैव काउ इन मायामी आश्रम व्हिच कुड नॉट बी डन बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, बट ही बिल्ट ए काउ शेड। वो वहाँ गौशाला बना दिए, गौशाला है, अभी तक भी है। हम तो सोचते हैं वहाँ कम से कम एक गोमाता की तस्वीर रखें। वी विल कीप ए नाइस पिक्चर ऑफ द काउ एंड द काफ, so that so dream of Gurudev we got materialized in Texas ashram। तो गुरुदेव के पूर्ण सहमति से क्रिया योग साधना के प्रचार के साथ हम गोमाता की सेवा तो नहीं कर पाते हैं जितना, उसी सेवा के लिए हम जुड़े हैं। और देखिए, हम जब हिंदी में बोलते हैं
विदेशी लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको बोलता हूँ। हमको समझ में आता है। देखिए, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। सचमुच क्या हमारे आचार विचार उच्चारण संस्कार सनातनी हिंदू है? प्रश्न है आपके पास। देखिए, हम विदेश जाते हैं, विदेशी लोग क्यों एक ऐसे साधु को स्वीकार कर लेते हैं? हम नहीं, सैकड़ों साधुओं को। क्या है उनके पास? सरकार ने भेजा है क्या? क्यों? हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो खान पान है, हमारे जो वेशभूषा है, हमारे जो आदर्श है, उसको भूल गए हैं। विशेष रूप से हजारों साल का पराधीनता, हजारों साल में जो कुछ नहीं हुआ था गड़बड़ी, आधुनिक भारतवर्ष में 72 साल में इतना नीचे हम गिर गए, उसको हम भाषा में प्रकाश नहीं कर पाएंगे। जो अनुभवी अपने अनुभव में, अपने हृदय में सोच सकेंगे क्यों हुआ। हम क्या ऐसे ही रहेंगे? हमारे उत्थान कैसे हो? महाराज जी जो बोले, आप तो हिंदी में सब समझ गए, तो उसको मनन करना चाहिए। हम महाराज जी के बारे में प्रशंसा नहीं करते हैं, थोड़ा बोल देता हूं। देखिए, महाराज जी के पढ़ाई इतने हैं। I'm telling in English, Maharaj ji has studied up to class 3, and I don't think he has studied really. His mind was maybe somewhere. देखो, महाराज जी के जो चिंतन है, शास्त्रों का निचोड़ हुआ, शास्त्रों का सार सर्वस्व। महाराज जी ने बोले, हम प्रवचन देने वाले नहीं है। अगर जो बोले हैं एक एक वाक्य चिंतन योग्य, मनन योग्य है। ये अपना हृदय का पुकार नहीं है, मुनि ऋषियों का पुकार है। मुनि ऋषियों के जो चेतना अभी सूक्ष्म रूप में रोते हैं, मुनि ऋषियों, वो उन्हों के आवेग महाराज जी के मुख से ही निकला है। तो हम यहाँ 7 दिन तो रहेंगे। आज अभी का जो कार्यक्रम, आप ठीक समय पर नहीं आए हैं। आप सबको ज्ञान है, जो पहली बार ऐसे कार्यक्रम का आए हैं, विदेश में हो। आई एम टेलिंग ऑल्सो इन इंग्लिश, यू ऑल नो दैट वी आर स्ट्रिक्टली पंक्चुअल, बट टुडेज प्रोग्राम वाज नॉट रियली पंक्चुअल. Many of you came late. It is not acceptable. If हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अब से जो जो कार्यक्रम होगा ठीक समय पर ही आ जाना चाहिए। आप सबको श्रृंखला से समय को नज़र रखकर 5 मिनट पहले आकर बैठो। हमारे क्रिया योग साधना के जो सार तत्व है, श्वास के ऊपर नजर, श्वास के साथ मंत्र। द एसेंस ऑफ क्रिया योगा टू वॉच योर ब्रेथ, इन एवरी ब्रेथ टू लव गॉड, नॉट टू फॉरगेट, टू बी पंक्चुअल, टू बी डिसिप्लिन्ड, टू फॉलो द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। हम यहाँ आए हैं जैसे हम इस 7 दिन सही तरीका से हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, इसीलिए हम प्रयत्न करेंगे। ज़्यादा बातचीत का ज़रूरत नहीं है। अपने चेतना जैसे ऊर्ध्वमुखी हो। महाराज जी बोले सहस्रार की तरफ हमेशा। तो इतने वाणी आपके सेवा में समर्पण करके अभी इस सत्र का हम क्या करते हैं, समापन करते हैं। इस उद्घाटन सत्र और विचार का धारा तो आएगा, चलता रहेगा। महाराज जी बात दिए हैं कल यहाँ महाराज जी हम सबके साथ रहेंगे। टुमारो महाराज जी विल बी हियर टू टॉक टू अस।
So it is also a blessing, and I hope Maharaj ji will stay longer and longer. मैं सोचता हूँ महाराज जी फिर भी महाराज जी हम महाराज जी मुक्त पुरुष है, गए के पीछे है, तो हम तो ये नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे जब जितना अनुकूलता हो, जितने सुखपूर्वक आनंदपूर्वक हम सबको महाराज जी अपने सानिध्य और क्या विचार हम सबको दें, इसी वाणी से आप सब सीधे होकर बैठिए। देखिए एक बात बोल देता हूँ, साधना का पहला सोपान है अपने मेरुहड्डियां को सीधे करके रखना, सीधे, टू सिट स्ट्रेट। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। सीधे होकर बैठना, शरीर को इतना हिलचल नहीं करना। यहाँ बैठ करके सत्संग में बैठना भी ध्यान है, ध्यान सिर्फ आंख बंद कर नहीं। सो सिटिंग इन द classes, discourse also is meditation, to sit straight, keeping attention on the breath. So, आंख बंद कर दीजिए, close your eyes, listen to the mantras. Gita Ganga cha Gayatri गौश्च गोविंद एव च सनातनस्य धर्मस्य पंच प्राणः प्रकीर्तिता मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सुरभ्यै 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 नमः। जय गो माता, जय गोपाल। सबको प्रणाम। जय गुरु, जय जगन्नाथ। जय गो माता, जय गोपाल। So name of this cow is Karuna, and her mother is in Pathmeda. Her mother's name is Samruddhi. When you go, you might have chance to see her. And she was the 21st child of her mother, and whose name is Manorama, in whose name this place, and her samadhi is there in Pathmeda. Manorama's 21st daughter is Samruddhi, and her daughter is Karuna, and she has her daughter and granddaughter here. You can imagine from one cow how many they can be multiplied. Oma pavitra pavitro va sarvavasthangato piva yasmret mandari kaksha sabaya pyantarasuti trivaram achamya prananayam yam kesvaya namasvaha om narayanaaya namasvaha om madhvaya namasvaha om govindaya namasvaha govindayastau prakshalya pranayama Om Bhuhu, Om Bhuvaha, Om Swaha, Om Maha, Om Jana, Om Tapa, Om Satyam, Om Apo Jyotirasmudam Brahma Bhurvasvaram Om Gandharpastva Pisva Vaso Paridadata Pisvasyashtye Dajamanasya Paridirasyagnirea Irita Indrasya Bhaurasya Dukshina Pisvasyashtye Dajamanasya Paridirasyagnirea Irita Mitravaranattvattarataha paritatandruvena dharmana visvasyarishte jajama nisya parijirasyagnirea idita Om Bhurva Shri Shrupyena Magandam Samarapyami Akshadam Samarapyami Puspam Samarapyami Atadupadi Pane Vidyam
हम दूराशि दर्प दर्पण्यं दर्पणं धूपमाग्रपयामि दीपमं चन्द्रमामनसोदादिष्टिक्षो अजायत श्रोत्राद्वा विष्णुप्रारस्तमुगादिनीरजायत धूपं दीपं दर्शयामि अम्नेविचं नाप्य आसीदन्तरिक्षकुमशीर्ष्णोर्द्यो समोदद पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् अमूर्वश्रीसृक्षेण मनेवितिं निवेदयामि मध्ये तोय आत्मनि जलं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम परब्रह्म परमात्मने नमः हस्त प्रक्षालं मुखं प्रक्षाल्य मध्ये तोयात्मने जलं समर्पयामि करोतु वन्दनादिगन्धं समर्पयामि आरति श्री मैया मैया के आरति हरण विश्वदैया के आरति काम सत्कर्म प्रदायिनि विठलय मन मुक्ति देव्याभिवन्दनं 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 दशदिक्पाल च देवताभिवन्दनं पुष्पैः देवता देव्याभिवन्दनं